Good morning, class. In the last lecture, we are solving some problems, so many problems. So now in this lecture, we are start the type of function. फंक्शन के कितने टाइप्स हैं वो आज स्टडी करेंगे, कौन से है वो भी देखेंगे. और हाँ, आपकी अटेंडेंस बहुत कम है. आपके फ्रेंड्स को भी बोल दो कि अटेंडेंस कंपलसरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो. इसलिए अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डालना, आपका नाम और कौन सा बैच है. कौन सा बैच मीन्स आप कौन से फील्ड में हो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कौन से डिपार्टमेंट में हो. मैं डेली आपका अटेंडेंस लेता हूँ. परसों भी लिया था, कल का भी लिया और आज का भी ले लूँगा. कंप्यूटर के बहुत स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डाले हैं अपना नाम एंड अपना डिपार्टमेंट. ओमकार, रोशनी है, विक्रांत है, प्रियंका है, सिद्धि से ऐसे बहुत जनों ने डाला है. देन एक जन था सागर गोलिम, उस सागर गोलिम उन्होंने तो अपना बॅच में नाही डाला. काय रे, आता मला कसं कळणार की तू कोणत्या फील्डमध्ये आहे. तू मेकॅनिकल घेतलं आहे, इलेक्ट्रिकल घेतलं आहे, कॉम्प्युटर घेतलं आहे. तर तुम्ही जेव्हा नाव टाकतील अटेंडन्ससाठी तर त्यापुढे तुमचं कोणत्या फील्डमध्ये आहे ते पण टाका, त्याप्रमाणे तुमची अटेंडन्स लागेल. सो एंड सिविल के 5 स्टुडंट आहेत, त्याच्यापैकी 3च जणांनी टाकलेलं आहे. तर बाकीचे 2 जण आपले फ्रेंड असतील तर त्यांना सांगा की तुम्ही पण अटेंड करा, कारण की अटेंडन्सला मार्क आहेत. तो पुन्हा एकदा परत सांगतो की अटेंडन्स कमेंट बॉक्समध्ये टाका, आपलं नाव आणि कोणती फील्ड आहे ते आपलं नाव टाका, पुढे लिहा इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर किंवा सिव्हिल की हे लिहा. आणि आपल्या मित्रांना पण सांगा की लेक्चर बघा आणि अटेंडन्स द्या. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. टाइप ऑफ फंक्शन. First type is a algebraic function. They contain algebraic expression such as a x plus 1, x square plus 2x plus 5, then in under root x minus 1 etc. ऐसे इक्वेशन में algebraic एक्सप्रेशन हो गया, वो होगा algebraic function. Just like a x plus 1, x square plus 2x plus 5, then under root x minus 1. So इस टाइप के होंगे मीन्स वो algebraic function. Then y is equal to f of x. So x plus 3 multiplied by x minus 2. So this is a algebraic function. Then another is a f of x. Y is equal to f of x. X plus 2 divided by x minus 1. So here also algebraic function. Then another is a logarithmic function. We know that logarithmic function में जिस function में log आएगा वो logarithmic function. So function having logarithm is called as a logarithmic function. So y is equal to f of x is equal to log of x belonging to the base e, and another is y is equal to f of x is equal to log of x plus in under root x square minus a square to the base e, and another is log of sin of x to the base e. Means both are log, means जिस फंक्शन में log होगा वो logarithmic function. Then exponential. We know that exponential, the function involving exponential terms are called as the exponential function. They are an inverse of logarithmic function. So we solve the sum of logarithmic, convert to the exponential, and exponential to logarithmic in semester 1. So that base of they are inverse of the logarithmic function. So example is
y is equal to f of x is equal to e raised to x, and y is equal to f of x is equal to a raised to x, and here also f of x is equal to e raised to x multiplied by sine of x. So this type means exponential function. Then fourth is a transcendental function. So function which are not algebraic function is called as a transcendental function. In other words, trigonometric, logarithmic, exponential and inverse trigonometry function is called as a transcendental function. Then their combination means वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी रहेगा, लॉगरिथमिक भी रहेगा, एक्सपोनेंशियल भी रहेगा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वो कंबाइन रहेगा, मीन्स सब भी आ जाएंगे, तभी हम उसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी बोल सकते हैं. तो इसमें cos of x minus sin of x, that is a transcendental function. Now y is equal to f of x multiplied by sin of x plus cos of x, and 2 sin inverse, here take a inverse, so 2 sin inverse of x plus cosec square of x. So these are a transcendental function. Then next is a composite function. Let y is equal to f of x is equal to x square plus 1 whole cube. So in this case, suppose u is equal to x square plus 1 means u is equal to in a bracket term. So y is equal to f of u is equal to u cube. Okay. ध्यान में दो, f of x is equal to x square plus 1 in whole cube in bracket का cube. Then we in this case suppose हमने माना कि ये जो इन ब्रैकेट में सा है वो ब्रैकेट में जो टर्म है, में जो इक्वेशन है उसको हमने u माना. सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो f ऑफ u इज इक्वल टू u क्यूब. सो f ऑफ u इज इक्वल टू u क्यूब and u is equal to this one. So this y is a function of u and u in the term of function of x. So u in a term of function of x. So y is a composite function of x through u. So y is a composite function होगा of x throughout u. Often we find case where y is a composite function of u. Here y is a composite function of u and v throughout x. V throughout x. Here x throughout v, but here v throughout x. Just for example, y is equal to in under root sin 2x plus 1. So here sin 2x plus 1 take u. So u is equal to sin 2x plus 1 and here v throughout vx na. So v is equal to 2x plus 1. So v is equal to 2x plus 1. So y is equal to in under root u. U is a sin v and v, we know that v is a 2x plus 1. Here say y is a composite function of u and v throughout x. V throughout x. So this example, y is equal to under root sin 2x plus 1. So in under root वाला टर्म u and इस u में से जो ब्रैकेट में है उसको हमने v माना. So y is equal to under root u and u is equal to sin of v and here v is equal to 2x plus 1. Or so another method में y is equal to f of u, y is equal to f of u under root u means u is equal to f of v means sin of v, and we know that v means 2x plus 1. So v is equal to f of x 2x plus 1. तो ये वाला इजी था, ये आपको जल्दी में ध्यान में रह जाएगा, ये लोग पर लग सकते हैं. Further, the composite of f and g is written as a
f of g of x, or fg or f of g of x. So in this way we can write means fg of x means f of g of x. So similarly gf of x is equal to g of f of x, and ff of x means f of g of x, and here g of x, so g of gx, gf of gx. So these are a composite function, and here now take inverse function. Inverse function, the two functions f of x and g of x are such that fg of x is equal to g of f of x is equal to x. Then f and g are identified function and inverse to each other. Function g denoted by f inverse, here f inverse. So we can read f inverse, here f raised to minus 1. So f raised to minus 1 means f inverse, we can read as a f inverse. हम f raised to minus 1 है, उसको हम कैसे रीड करेंगे, f inverse. So in this way हम उसको रीड करेंगे. If y is equal to f of x is a function, then its inverse is f inverse y is equal to x. We know that f going opposite side, so f inverse y is equal to x. So in this way that is the inverse function. So for example, f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to x minus 3 divided by 2. So we are using this one. So fg of x is equal to f of g of x. So we put here g value, we put here f of value means this one, and x means g of x. Here x means g of x. So we put g of x and then put the value of g of x here. So 2 get cancel means 3, and here minus 3 get cancel, only remaining term means x. Then gf of x means g of f of x. Now in the g of x term we put x is equal to f of x. So f of x minus 3 divided by 2. So 2x plus 3 minus 3. So they cancel, and here also 2 get cancel, only the remaining is x. So fg of x is equal to gf of x is equal to x. So both are same. So the f and g are inverse to each other. So ये same आ गया. So both f and g are inverse to each other. The next, parametric function. Now in this function, in mathematics, it is often convenient to express both y and x in term of third variable, such as a theta, t, r, s, and so many things. So this third value is called as a parametric. So this third value is called as a parametric. We know that the theta, r means a radius, and we do not also denoted also h means the height. So in this way, the third variable is called as a parametric. And theta means, we know that theta means the angle between triangle and rectangular. So theta हम किसके लिए डिनोट करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए. मीन्स वो थीटा हो रहता है, मीन्स कुछ ना कुछ वो एंगल रहता है. सो जस्ट टेक वन एग्जांपल, दैट इज x इज इक्वल टू a cos of theta and y is equal to a sin of theta. So where here theta is a parameter. So theta is a parameter. Now next, second example, x is equal to 80 square, y is equal to 280. Here t is a parameter. So parameter function, we know that theta, t are these
means this third variable are called as a parameter. So theta means angle, so इसको हम पैरामीटर बोलते हैं. Now next, explicit function. If the variable y is expressed in terms of x alone explicitly, that is in the form of y is equal to f of x. The function is called as a explicit function. Here variable y is expressed in term of x. So this one and that in the form y is equal to f of x, the function is called as the explicit function. So example 2y minus x square plus x minus 5 is equal to 0 is the relation. Then we can write, so इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y एंड ये पूरी की पूरी टर्म गोइंग ऑपोजिट साइड, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई. सो ये एक टाइप होगा. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 है वो ऑपोजिट साइड आ जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा. वो 1/2 हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वी नो दैट y मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर minus x plus 5. So that is a explicit function, and in this way, so y is equal to f of x is equal to 2x minus y, here 10x sin square x. So this is also explicit function. Now ninth one is a implicit function. Now implicit function, the variable x and y are not separable from each other. Now here variable x and y are not separable, वो separable नहीं है from each other से वो separable नहीं है. Form the function f of xy is equal to 0 is called as a implicit function. So it is called as an implicit function. Now another way we can say that in implicit function one cannot express y as x alone. So one cannot express y as x alone and vice versa. Vice versa means one cannot express x as a y and y as a x. So same vice versa. So x square plus xy minus y square is equal to 0. Then x square plus y square is equal to sin x plus y, and x square plus y square plus 2yx plus 2 f of y, fy plus c. So this example is a implicit function. And next, even function. So we know that a even number. So now these are a even function. For y is equal to f of x, if f minus x is equal to f of x for all x belonging in R means real number, then f of x is called as a even function. Means function है y is equal to f of x. So ये टर्म प्रूव हो जाती है तो वो ये फंक्शन इवन है. मीन्स वो टर्म है एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे. अगर वो दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो फंक्शन इवन है. सो दैट फंक्शन इज अ इवन. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स मीन दिस एक्स आर अ रियल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन. Take example, y is equal to f of x is equal to x square, then f of minus x is equal to minus x square is equal to x square, because of minus x multiplied by minus x, so they gives plus x square, that is f of x.
So that is a f of x, means f of x is equal to x square is a even function. Now here y is equal to f of x multiplied by sin of x. So here हमको ये चेक करना है ये इवन है या ऑड है. So we put here x is equal to minus x. So x f of minus x, so minus x sin of minus x. So we know that sin of minus theta means minus sin of theta. So minus sin of theta. Now here minus multiply. So they are plus x multiplied by sin of x, and we know that x multiplied by sin of x means f of x. So means f minus of x is equal to f of x. So f of x is equal to x multiplied by sin of x is a even function. Then odd function. So odd function के लिए उल्टा. For y is equal to f of x is the function if f of x f of minus x is equal to minus f of x. Here even के लिए इधर प्लस था, but here minus, so they give odd function. Means f of minus x is equal to minus f of x for all x belong in R, means x belong in a real number. Then f of x is called as a odd function. So take example, y is equal to f of x cube divided by x square plus 1. Then we put here, पहले पुट करते हैं कि माइनस एक्स, और अब हमको ये वैल्यू दी हुई है. सो इसका माइनस, ये माइनस ऑफ एक्स सेम आया तो वो ऑड है. सो पुट माइनस एक्स, सो माइनस एक्स क्यूब मीन्स minus x multiplied by minus x multiplied by minus x. So here plus x square multiplied by minus x means minus x cube, and here square means plus x square plus 1, that is a minus f of x. So minus f of x, and here here f of minus x, so that is a odd function. And here also y is equal to f of x is equal to sin cube of x plus tan of x. So now put f of minus x, so sin minus x whole cube plus tan of minus x. So now also we know that we have studied this formula in semester 1. Sin of minus theta means minus sin of theta. So here minus sin x minus sin x whole cube, and this also we know that tan of minus x means minus tan x, so minus tan x, and these are a cube, so minus sin cube x minus tan x. Now minus sign common outside, minus sin cube x plus tan of x, and these are a sin cube x plus tan x, that is a f of x, so minus f of x. So f of minus x is equal to minus f of x. So f of x is equal to sin cube of x plus tan of x is a odd function. So मीन्स इवन के लिए क्या था, f of minus x is equal to f of x, ये प्रूव हो गया तो वो इवन है. देन f of x f of minus x is equal to minus f of x आ गया, तो वो ऑड है. So in this way we can find even and odd function. Then next is the periodic function. If the function f of x is such that f of x plus t is equal to f of x, where t belong in a R, means t belong करता है real number, then f of x is called as a periodic function, and the smallest positive value of t is called as a fundamental period of the function. Now the small positive value of t means वो small positive value है t is called as a fundamental period of the function. तो ये periodic function है. sin of x plus 2 pi is equal to sin of x, ये फॉर्मूला हमको मालूम है. कि sin of x plus 2 pi is equal to sin of x. So here sin of x
is a periodic function with period 2 pi. Now here tan of x plus pi, tan of x. So tan of x is a periodic function with pi, means with period pi. So that is there are 12 फंक्शन. तो ये अच्छी तरीके से एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो कि वो कौन से फंक्शन है. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स. अभी हम एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद आएगा. Then if f of x is equal to sin of x, then show that f of 3x is equal to 3 f of x minus 4 multiplied by f cube of x. So we have means given that f of x is equal to sin of x. So same हमने पिछले सम में किया था, वो x की जगह हम 3x पुट करेंगे. now 3x, so sin of 3x. So we know that the formula of sin of 3x semester 1 में पढ़ा था. sin of 3x means 3 sin of x minus 4 sin cube of x. That is the formula. Then here sin of sin cube of x, so हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं sin of x whole cube. Then 3 sin x minus 4 sin of x whole cube. And sin of x, here we know that sin of x means f of x, so 4 f of x whole cube. And here also sin is a f of x, so put f of x, so 3 f of x minus 4 f cube of f cube of x. So hence prove, हमको यही प्रूव करना था तो वो प्रूव हो गया. बस हमको x की जगह क्या पुट कर रहे हैं वो हमको मालूम पड़ गया तो आंसर आराम से आ जाता है. Then if f of x is equal to 1 divided by 1 minus x, find f of x. इधर फाइंड करना है f of x फाइंड करना है. मीन्स x की जगह हम f of x डालेंगे, x की जगह हम f of x डालेंगे. So find f of x, we replace by x by f of x in question number 1, means this one. So f of x is equal to 1 divided by 1 minus x. Here x means f of x. So 1 divided by 1 minus 1 divided by 1 minus 1 divided by 1 minus x. So now this term multiplied by this and minus with this one, so that gives 1 divided by 1 minus x minus 1 divided by 1 minus x. So ये डिवाइड हो रहा है, so ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. So 1 minus x divided by 1 minus x minus 1. So ये प्लस एंड माइनस गेट कैंसल, so 1 minus x minus x. Now minus 1 common outside, so minus 1 plus x divided by minus x. Now here minus get cancelled, so x minus 1 divided by x. So x minus 1 divided by x. So this is, we are finding f of x, f of x, that is x minus 1 divided by x. Now these are some same. F of x is 1 divided by 1 minus x. Here also f is divided by 1 divided by 1 minus x. Now here show that the f of x means, ये हमने तो प्रूफ किया था ऑलरेडी, ये छोड़ दिया, तो इतना वाला हमने प्रूफ किया, अभी उसका आंसर ये आया. तो हमको क्या प्रूव करना है कि f of x उसकी वैल्यू x है. ओके, और ऑलरेडी हमने इतना वाला मीन्स ये वाला टर्म फाइंड किया, दैट इज x minus 1 divided by x. So solve till एक्सप्रेशन 2, मतलब हमको फर्स्ट इधर इतना सॉल्व करना पड़ेगा. सो हमने ये ऑलरेडी सॉल्व किया है. तो वो इक्वेशन 2 तक मीन्स अब वो एग्जाम्पल 2
सो सेम, बिकॉज हमने ये प्रूव किया, मतलब ये हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा, देन उसमें ये पुट करना पड़ेगा। देन इधर x की जगह हमको फिर से एफ ऑफ एक्स डालना पड़ेगा, तभी हमको ये f की वैल्यू मिलेगी। मीन्स हमको ये एफ ऑफ एक्स प्रूव करना था, तो हम एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, तो उसकी वैल्यू ये आई। देन इधर x की जगह हम एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू हमको मिलेगी। तो उसकी वैल्यू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज अ 1 minus of x, and here divided by 1 divided by 1 minus of x. So this term are multiply this and minus with this, so 1 minus 1 plus x divided by 1 minus x and 1 divided by 1 minus x. So 1 minus x get cancelled, and here remaining is 1 minus 1 plus x divided by 1. So here minus plus get cancelled, only remaining term is x. So hence proof f of x is equal to x. The next example, state whether the function f of x is equal to a to the power x plus a to the power minus x divided by 2 is even or odd. अभी हमको प्रूव करना है ये इवन है या ऑड है, तो हमको मालूम है, उसके लिए हम f ऑफ माइनस एक्स लेंगे। सो वो एफ ऑफ एक्स आता है या माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। अगर एफ ऑफ एक्स आया तो वो इवन है, एंड माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो वो ऑड है। सो लेट्स प्रूव इट। सो वी हैव मीन्स गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a raised to x plus a raised to minus x divided by 2, get equation number 1. Then replace x by x minus x, so वही करते हैं हम f of minus x. So here a raised to minus x and a raised to minus x, so minus minus plus हो जाएगा, so a raised to the minus x and a raised to x divided by 2. so हमने ये फर्स्ट लिखा, देन ये लिखा, so x a raised to x plus a raised to minus x divided by 2 means f of x. so वो f of x यही by equation number 1, so means f minus x is equal to f of x. so this condition for the even function, तो ये condition हमको पता है वो even के लिए है। so f of x is equal to a raised to x plus a raised to minus x divided by 2 is an even function. okay, now we are stop here. then अभी आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डाल दो, और आपको फ्रेंड को भी बोलना लेक्चर देखो और अपना अटेंडेंस डाल दो। मैं अभी डेली नोट डाउन करता हूँ किसने किसने अटेंड किया है या नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में मैं देखूँगा। अपना व्यू बहुत हो जाता है पर आप कमेंट बॉक्स में नहीं डालते। आपका नाम ही तो डालना है, नाम एंड कौन सा अपना बैच है, मीन्स कौन सा अपना डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, वो सब डाल दो, नाम एंड ब्रांच। ओके, सो फटाक से अपना अटेंडेंस डाल दो अभी।